Good morning, dear students. Today our topic is new, that is prepositions. First of all, we will start from the definition of the prepositions. We will see from this grammar that what is said by it about the prepositions. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun. It is known to you that preposition is that which we place before a noun or a pronoun. Noun and pronoun are known to you. That is, which shows the name of anything. A noun equivalent. It sometimes there are some words which are not themselves noun, but they are noun equivalent. They have the characters and the features of the noun. What it shows? To show the relation to any other word of the sentence, and there may be other words in the sentence, and this preposition shows the relation of this noun or pronoun or noun equivalent with the other words in the sentence, in particular sentence. I think that you may have understood. The noun or the pronoun or the noun equivalent is called object. In this sentence, the noun or the pronoun or whatever stands for the noun, that is which is equivalent to noun, is called its object. For example, you can understand with the help of the examples. Bob is coming with Bill. There with is preposition and it has come before the noun Bill. With what? Anna is killed in swimming. In has come with noun equivalent. Here swimming, if we see that it is not directly noun, but it is noun equivalent. I think that you have understood that swimming here is equivalent to noun, because here it shows the noun. What do you think of him or her? Him or her, it is known to you that they are pronoun. So, of comes before him or her. You can also be able to understand the preposition with the help of this table. There are some examples. For example, put the cup on the dish. Yani ki on. In the same way, the cows are in the field. Yani ki in. I will understand you once again. Don't worry. Mikhail goes to yani ki direction, school. He is fond of reading novels. Yani ki of what? Of. Leela lives with her parents. Yani ki with whom? You should stand by him or her. Yani ki by whom you should stand. The fan is moving or rotating over our head. Yani ki over our head. We can say above our head, over our head. I will show you the differences, don't worry. The sky is above our head, above, which is far away. I think that here you are able to understand the definition to some extent. I always say that in the examination you will not be posed what is definition. There you have to give the answers of the prepositions. You should be able to understand the prepositions. There are some prepositions which I have taken with the help of the images, so that you should be able to remember them and understand them. For example, this ball is behind, यानी कि पीछे, behind the box, यानी कि उसके पीछे. This ball is in front of, यानी कि इसके आगे, in front of the box. This ball is next to, यानी कि इसके नज़दीक, box के नज़दीक. The ball is between, यानी कि इन दो के दरमियान, इन दो boxes के दरमियान. This ball is near, यानी कि इसके नज़दीक हैं. नेक्स्ट यहाँ का माने इसके बहुत नज़दीक, नियर का माने नज़दीक है, ये ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है. Above means ऊपर, यानी कि not in touch with it. Above the box, आप तो यहाँ देख रहे हो, above the box. This is
in the same way below, yani ki not in touch with it but under, or we can say it is below. In means under. In the same way, on means par, is par. I think that you have understood it. One second. I have taken so many images so that you should be able to understand. Now the image of the apple and the other thing is, this apple is between, yani ki darmiyan the two boxes. This is in front of the book, yani ki iske aage, book ke aage. This is behind the book, yani ki book ke पीछे side से. हाँ, this H is to the left of this. Left. We have to see our left. In the same way, this apple is under or below this dais or table. This apple is on, yani ki par the book. This apple is next to, yani ki usse nazdik, next to the book. This H is to the right, this one. This is right to this table of dais. Once again, I have taken so many images so that you should be able to remember them. This is on, yani ki us par, on the box. This is in the box, yani ki uske andar. This is next to or beside, yani ki uske nazdik, ya by the side, uske paas hi. This is in front, yani ki aage of the box. This is behind, yani ki piche. This is between, means between the two boxes here and there, and this is between them. This is under the box, iske under. This is through, yani ki aar par. This is around, yani ki these are the apples which are around the box. It is in between, यानी कि उसके इर्द गिर्द. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा. फिर भी यहाँ मैंने अब मोशन के दिखाए हैं. आपको मालूम है कि कुछ हमें मोशन दिखाते हैं, मिसाल इनटू या ऑन द, ओवर द, तो ये मोशन दिखा रहे हैं. मिसाल के लिए इनसाइड द बॉक्स, यानी कि उसने छलांग मारी है बॉक्स के अंदर. मोशन और एज वेल एज प्लेस भी दिखा रहे हैं, दोनों इकट्ठे. अंडर द बॉक्स, यानी कि अंडर द बॉक्स वो चला गया है. ऑन द बॉक्स, वो बॉक्स पर चढ़ा है. अबव द बॉक्स, उसने बॉक्स के ऊपर छलांग मारी है. बिहाइंड द बॉक्स, वो बॉक्स के पीछे है. बिटवीन द बॉक्स, वो बॉक्स के दरमियान से चला गया है. अप, उसने छलांग मारी है बॉक्स पर. या डाउन, उसने बॉक्स से नीचे छलांग मारी है. ओवर मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि उसने बॉक्स के एक साइड से दूसरे साइड छलांग मारी है. थ्रू, वो बॉक्स से निकला है. हाँ, पास्ट हियर मीन्स नज़दीक है, वहाँ टेनिस नहीं है, यहाँ टेनिस नहीं है. वो बॉक्स के नज़दीक से निकल गया है. तो यानी कि वो किसकी तरफ चला जाता है, वो बॉक्स की तरफ चला जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन दिखा रहा है. हाँ, अवे फ्रॉम, वो बॉक्स से दूर चला जा रहा है. अवे फ्रॉम द बॉक्स. इनटू द बॉक्स, उसने बॉक्स में छलांग मारी है. आउट ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स से बाहर छलांग मारी है. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगी. ये बहुत आसान है. हाँ, ये और कुछ प्रोपोर्शंस ऑफ मूवमेंट जो मैंने पढ़ा है यहाँ, वो भी हो सकते हैं थोड़ा. डाउन द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ी से नीचे. अप द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ी के ऊपर. आउट ऑफ बॉक्स, यानी कि बॉक्स से बाहर निकलना. इन टू द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में जाना. डायरेक्शन भी दिखा रहा है और पोजीशन भी. टुवर्ड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स की तरफ आना. अवे फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि बॉक्स से बाहर निकलना.
पास टू द बॉक्स यानी कि बॉक्स के नज़दीक, ओवर द बॉक्स यानी कि बॉक्स के ऊपर से, ऑन टू बॉक्स यानी कि बॉक्स पर, ऑफ द बॉक्स यानी कि बॉक्स से नीचे, अराउंड द क्यूब यानी कि क्यूब के इर्द गिर्द, अंडर द बॉक्स यानी कि बॉक्स के नीचे। इसी तरह अलॉन्ग यानी कि एक साइड से दूसरी साइड, अलॉन्ग द रोड, अक्रॉस द रोड यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ, थ्रू यानी कि आर पार, थ्रू द ट्यूब यानी ट्यूब के एक साइड से दूसरी साइड तक। मुझे लग रहा है आपको समझ में आए होंगे। हाँ, अब बहुत सारे प्रोपोर्शन, बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल अबाउट, अबो, अब्रॉड, अकॉर्डिंग टू, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अगो, ahead of, along, amidst, among, amongst, apart, around, as far as well as, aside, at, away, because of, before, behind, below, beneath, beside, besides, between, beyond, but, by means of, close to, despite, down, due to, during, except, far, from, hence, in accordance with, in addition to, in case of, in front of, in lieu of, in place of, in spite of। ये आपको याद रखने हैं। into, inside, instead of, into, like, near, next to, notwithstanding, of, on account of, on behalf of, on to, on top of, on to। यहाँ ये आपको ख्याल रखना है, जब भी on to होगा ये इकट्ठे लिखना होता है। opposite, out, out from, out of, आउटसाइड, इसी तरह ये आउटसाइड से भी इकट्ठे लिखना होता है। ओवर, ओइंग टू, पास्ट, पर, पेयर टू, राउंड, सिंस, देन, थ्रू, थ्रू आउट, टिल, टाइम्स, टू, टुवर्ड्स, अंडर, अंडरनेथ, अनलाइक। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शंस हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि फिर आपको सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोपोर्शन है, कौन सा प्रोपोर्शन नहीं है। ये भी और कुछ है। हाँ, फॉर एग्जांपल ये प्रोपोर्शन ऑफ प्लेस हैं, जो जगह दिखा रहे हैं, एट, इन और ऑन। आपको खुद ही समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। हमें एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने हैं, डोंट वरी। अभी तो मैं मतलब डेफिनेशन पर ही हूँ। एट कॉलेज यानी कि कॉलेज पर, एट होम घर पर, एट रिसेप्शन यानी कि रिसेप्शन पर, एट स्कूल स्कूल पर, एट बॉटम नीचे, एट द सिनेमा पर, एट द कॉर्नर यानी कि कोने पर, एट द क्रॉस रोड यानी कि क्रॉस रोड पर, एट द डेस्क, एट द डिनर, एट द डोर, एट द एंड ऑफ द लेन, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द एग्जिट, एट द फ्रंट डेस्क, एट द साइड, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द यूनिवर्सिटी, एट वर्क। मुझे लग रहा है आपको एट वाले समझ में आए होंगे, ये बहुत आसान है। इन द टैक्सी यानी टैक्सी में, यानी कि उसकी चारों तरफ बंद होती है, या एक कार जहाँ चारों तरफ बंद होगा और इसके अंदर हम कहते हैं। इन द सिकाई यानी कि सिकाई में, सिकाई पार नहीं, सिकाई में। इन द बिल्डिंग में या टावर, इन ए रो यानी कि रो में। इन द न्यूज़पेपर, इसी तरह न्यूज़पेपर में। इन द गार्डन, इन ए बोट, इन जर्मनी, इन द स्टोव, इन द किचन, in my pocket or bag, in the room, in the book, in a building, in the park, in a lift, in a helicopter, in a box, in the picture, in the park street, in the bathroom, in the world. Now on the way, on the radio, on the page, on the bicycle, on a ship, on a horse यानी किस पर, on a train मिसाल ट्रेन पर और बस पर, on the right, on the floor, on the menu, on the left, on the cover, on the rug, on an elephant, on the table, on the carpet, on a page, on television, on the wall, on the television। I think that you are able to understand this। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि आप मैं एक शॉर्ट ही वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के फिर कह रहे हैं सर हमें प्रॉब्लम होती है ज़्यादा बड़े वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मुझे उम्मीद है कि जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करेगा, तो लाइक भी करना है। और ख़ासकर ये है कि फीडबैक इज़ कंपलसरी। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स में
फीडबैक सेंड करेंगे, वो क्या भी होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मगर फीडबैक तो होना चाहिए। और अगर आपको मतलब अपने कोई होगा, आपको लगा कि ये अच्छा है, तो आई होप दैट यू विल शेयर विद देम आल्सो। थैंक्स। ओके बाय।